इसका आंसर क्या है? हमने देखा था क्लॉकवाइज अगर एरोज होंगे तो पॉजिटिव वर्क डन, एंड बिगर द लूप बिगर विल बी द वर्क डन. क्या, व्हाट इज द आंसर? Sir, C and E makes the biggest clock. C and E. Okay, E is here like this. Yes, sir. So answer we should be C and E. CE. Let's see the answer. C and E maximize area enclosed by the clockwise cycle. ठीक है, तो C and E में maximum area है and also clockwise cycle, because when the pressure is P here and volume V here, so we have to see clockwise cycle. That will give you the maximum work done. Right answer. All right. Yes, So sir. this is the question based on the work done can be calculated by the area of the loop. Clockwise loop will give you positive work done, and anti-clockwise loop will give you negative work done. All right. Now, first law of thermodynamics. It is about the conservation of energy. As zeroth law was dealing with the temperature, it is dealing with the conservation of energy. It is based on the energy conservation. तो देखिए इसमें, suppose this is the system here, यहाँ पर दिख रहा है, and you give the heat, piston goes outward. Initially it was here, यहाँ पे था piston पहले, now it has gone upward, है ना? So there is some work done because piston is being pushed out, pressure is there, change of volume is there, work done will be there, P delta V, and also that this gas will absorb some temperature, some heat also. Therefore, its internal energy will also rise. So heat given by this will be Q, which will be equal to work done plus change of potential, change of energy of the gas, work done by the gas and its change of energy. So heat is used in two parts, which will be doing work also, part of the heat energy, and the remaining part will increase the internal energy. That's what is the first law of thermodynamics. Okay. Energy delta Q supplied to the system goes in partly to increase the internal energy of the system, that is delta U, and rest in the work on the environment, work done by the system on the environment or surrounding, we can say. So this is known as the first law of thermodynamics, which is given by delta Q. Heat given is in two parts, delta U plus delta W. Okay. Now work done can also be written P delta V. Already we have seen yesterday class. Work done is product of pressure and change of volume. Now, sign convention also you have to remember. Already we have done one by one. Again, let us see. Heat supplied to the system is taken positive. Delta Q will be positive. अगर हमने इसको गैस को हीट दी तो प्लस हो गई इसके अंदर, एंड अगर हमने हीट इज टेकन आउट फ्रॉम द गैस, हीट इज रिजेक्टेड बाय द गैस, heat is rejected by the gas or system to the surrounding को दे रहे हैं, तो लॉस हो रही है, इसकी माइनस हो जाएगी, उतनी माइनस हो जाएगी, है ना? जैसे आपने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया तो उतना प्लस हो गया, बाहर निकला तो माइनस हो गया. इट इज सिमिलर टू दैट. सिंपल. एनीथिंग क्लियर? एनी डाउट?
Well, it is simple law based on conservation of heat, conservation of energy, we can say. No problem. You can note, you can see this. This extra thing we can remove here. ये थोड़ा मैं निकाल रहा हूँ. This is not required here. All right. What about internal energy? When will be positive? When it goes up, positive, goes down, then negative. Work done. Again, when the piston goes up, goes outward. Work is done on the system. Work is done on the work is done by the system on the surrounding positive. When piston goes inward, compression takes place. Work is done by the surrounding on the system, then negative. So you have to remember the sign convention in order to do the numericals correctly. Okay. No problem till now. No, sir. So let's see, can we do one or two questions based on the first law of thermodynamics? जैसे ये क्वेश्चन है, देखिए. If heat of 10 calorie is supplied to the system and work done on the system by the surrounding is 5 joule, find change of energy of the system. गैस की कितनी एनर्जी चेंज होगी? Can you solve and tell me the answer fast? Yes, sir. Okay, do it. Sir, 5. 5. Okay, any other answer? देखो, अगर हम without sign, if you do it without knowing the physics also, common sense से कर सकते क्या इसको? Yes, चलो sir. पहले फार्मूले से करते, फिर कॉमन सेंस से करते. देखो, पहले तो ये कैलोरी है, ये जूल है. मेक इट जूल हियर. हीट इज सप्लाइड. हीट सप्लाइड मींस ऐड हो रही है इसमें ना. इसमें ऐड हो रही है क्यू. डेल्टा क्यू इज 10 कैलोरी and 1 calorie is 4.2 joules. So this is 42 joules. Now, work done on the system. On the system क्या होता है work done? Negative होता है ना. -5 joules. ठीक है. Compression में negative होगा ना. You are doing the work on, means surrounding is doing the work on the gas. ठीक है. Using the first law of thermodynamics, FLT. From FLT, first law of thermodynamics, heat supplied is equal to work done plus change of potential, change of internal energy. So heat supplied is 42, work done is 5. So therefore, change of internal energy will be 42 plus 5, 47 joules. Clear? Yes, Now, sir. Sir, if you have to convert it into SI yes, unit. sir. I दोनों forgot का to convert it. सेम होना चाहिए. और ऊपर से अगर हम कॉमन सेंस से भी देखें, देखो व्हाट इज हैपनिंग. यहाँ से आप 42 जूस दे रहे हैं उसको, हीट को, और ऊपर से भी प्रेस कर रहे हैं उसको, है ना. ऑन द सिस्टम मींस प्रेसिंग द सिस्टम. इधर से प्रेस करने से जो आप 5 जूल वर्क करेंगे किधर जाएगा? इसके अंदर इकट्ठा हो जाएगा. वो दोनों मिलके 47 हो जाएंगे कि नहीं?
Are you getting this point? You are pressing it, you are doing the work on the gas, compression करते है ना. आप सपोज पिस्टन को प्रेस करें या बलून में गैस भरी है उसको कंप्रेस करें तो उसका उसमें उसमें टेम्परेचर बढ़ता है, उसको एनर्जी मिलती है. यू आर कंप्रेसिंग इट, रिड्यूसिंग द वॉल्यूम, है ना. यू आर डूइंग द वर्क ऑन द गैस, वर्क ऑन द सिस्टम. तो आपका जो वर्क है 5 जूल किधर चला जाएगा, गैस के अंदर, सिस्टम के अंदर चला जाएगा. ऊपर से ये भी दे रहे हैं, आप बाहर से भी हीट दे रहे हैं उसको, यहाँ से भी हीट दे रहे हैं, ऊपर से ये भी पिस्टन भी प्रेस कर रहे हैं. तो दोनों तरफ से हीट मिल रही है उसको, दोनों ऐड होनी चाहिए. अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ आल्सो वी आर गेटिंग सेम रिजल्ट. According to law of common sense also you will get same result. Got it? Yes. Are you there? Okay. एक और one more. ये नोट कर लो, नीचे वाला क्वेश्चन भी देखो. Read that question also. क्या समझ में आया, इसमें कुछ समझ में आया? Sir, I understood that the system was taken from I to F, that is 2 states, like normal states, and it was taken around the path IAF according to the figure. And along the path, Q was 50 and W was 20. Which thing will remain constant? You go through this path, or you go directly, or go through this path. What one thing is to be remaining constant? कौन सी चीज कांस्टेंट रहेगी बोलो? Sir, You go through any path. Yes, you go through any path. Internal energy is the state function, independent of the path, independent of the process. So you are going from this to this. Both the things are given, Q and W. You will get the internal energy, change of internal energy, using the first law of thermodynamics. Then you apply the first law of thermodynamics from this path. You will get the unknown. So change of internal energy will be calculated from the first path, and that is valid for through any other path or through any other process. तो पहले आप delta U निकाल लीजिए. Delta U is heat supplied minus work done. First law of thermodynamics. कभी-कभी first law of thermodynamics में लोग okay from FLT heat supplied is work done. तो this is ऐसा भी लिखते हैं. First law is, some of the books write like this: change of internal energy is difference of the heat given and work done. ठीक है, both are same. So heat given is how much? 50. Work done is 20. So 30 joules, 30 calories हो गया. So this change of it, since change of energy is independent of path, since delta U is independent of process. तो ये किसी भी प्रोसेस के लिए यूज कर सकते हैं हम, प्रोवाइडेड इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन आर सेम. तो दिस इस पाथ से भी जाएंगे तभी भी चेंज ऑफ इंटरनल विल बी रिमेनिंग सेम. ठीक है. नाउ अलोंग द अदर पाथ, along IBF, we again use the first law of thermodynamics. इंटरनल एनर्जी तो डिपेंड नहीं करती पाथ पे, उसको डेल्टा यू ही लिखते हैं. वर्क डन डैश कर दिया यहाँ पे. So now this is 36 now. Change of internal energy is 30. New work done, in this case work done will be how much? 6 calorie. B option. समझा कि नहीं है? फर्स्ट पाथ से आपने चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी निकाल ली using the first law of thermodynamics, and again using the first law of thermodynamics through the second path, in which change of internal energy will remain unchanged, will remain same. So that point we can use. So this is competitive examination question.
this can be important question. Those who are going for competitive examination, this question is good question. Sir, was this asked in JEE? Yeah. JEE mains. So one more point, let me tell you. For the first law of thermodynamics, we have seen just now first law of thermodynamics and sign convention. Heat supplied is used in two parts. One will be changing the internal energy of the gas. Suppose the other part will be used to do the work. Work done can also be written P del pressure into change of volume. Suppose अगर volume change नहीं हो रहा है, volume change नहीं हो रहा है, it is constant volume process. Piston is locked here. Constant volume process को हम isochoric process भी बोलते हैं. So we are going to see the processes, in fact 4 processes, but यहाँ से हम अगर थोड़ा बहुत और समझने की कोशिश करें, constant volume process में volume change नहीं होगा, तो work done will be 0, है ना, piston will be locked, है ना, जो भी heat देंगे all will be changing the internal energy, all heat will be used to change the internal energy, है ना, और some of the process किसी में internal energy change नहीं होती. कौन सा process हो सकता है जिसमें internal energy change ना हो? Can you give some name, some of the process in which internal energy will not change? उसकी जो एनर्जी है, अंदर की एनर्जी, गैस के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है, वो चेंज नहीं होती. तो दैट विल बी which process? That will be isothermal process. Isothermal process में टेम्परेचर चेंज नहीं होता. Iso means same, thermal means temperature. तो isothermal process में टेम्परेचर चेंज नहीं होता. अगर टेम्परेचर चेंज नहीं होता तो इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होती, 0 हो जाएगी. तो उसमें जितनी भी हीट देंगे isothermal process में, all will be doing the work. सपोज आपने 100 जूल दे दी तो 100 जूल वर्क मिलेगा, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. ठीक है, तो लाइक दिस एक और प्रोसेस होता है जिसमें हीट ट्रांसफर नहीं होता, एडियाबेटिक प्रोसेस. तो हीट विल नॉट बी ट्रांसफर्ड, तो ये 0 हो जाएगा. तो वर्क डन विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी. तो जितना वर्क डन होगा उतनी इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी एडियाबेटिक प्रोसेस में. Work done will be at the cost of internal energy. Internal energy will decrease, then only work done will be happening. So like this, we can just define all the processes with the first law of thermodynamics, which are coming up now. Processes we are going to do today. Okay. So first law of thermodynamics is very useful. It is based on the conservation of energy. यहाँ पे लिखूँ मैं, based on conservation of energy. It defines the energies, and zeroth law defines the temperature. Bernoulli's theorem was also based on conservation of energy, है ना? Alright, आगे देखें. So this question we are done. Now, did we do the specific heat in the previous chapter? Heat supplied is ms delta T, like that. So as per the specific heat, but the heat for unit temperature change and unit mass. Do you remember that? And for water, how much it was? 1 kilocalorie. कितना था वाटर का? 1 kilocalorie per kg per change of per वाटर का कितना था याद है? 1 calorie per gram per Kelvin, or it will be 1 kilocalorie per kg. It was more, I want to just highlight, it was fixed value, है ना? It was constant, but here specific heats of the gases are not constant. Specific heat of the gases is process dependent. It can be ranging from 0 to infinity. हाइड्रोजन गैस ले लीजिए,
अगर बोला जाए उसकी स्पेसिफिक हीट कितनी होगी, तो यू विल जस्ट आस्क फॉर विच प्रोसेस, बिकॉज डेफिनेशन वही रहेगी, हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ द गैस और 1 kg ऑफ द गैस पर यूनिट, है ना, चेंज ऑफ टेम्परेचर। 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितनी गैस लगेगी यूनिट मास के लिए, तो प्रोसेस पे डिपेंड करेगा। फॉर एग्जांपल आइसोथर्मल प्रोसेस है, उसका टेम्परेचर तो बढ़ता ही नहीं है, तो यू इन अदर वर्ड्स डेल्टा टी इज 0, तो हीट रिक्वायर्ड इज इन्फिनिटिव। इस तरह से प्रोसेस डिपेंडेंट होती है। सेम गैस कैन हैव स्पेसिफिक हीट फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये आपने केमिस्ट्री में भी शायद किया होगा। डू यू नो हाउ डू वी डिफाइन द मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस? यहाँ पे मोल पर मोल है, अर्लियर वी हैव सीन पर केजी और पर ग्राम, यहाँ पे पर मोल पढ़ेंगे। तो वी डिफाइन इट टू प्रोसेसेस ओनली, एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड एट कांस्टेंट प्रेशर, है ना। अगर हमने उसका वॉल्यूम फिक्स कर दिया, ठीक है, तो वॉल्यूम अलाउड, उसके पिस्टन को एक्सपेंड कर लॉक कर दिया हमने, तो इट विल बी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, है ना। तो वॉट एवर हीट वी गिव to raise the temperature of 1 degree by unit mole, that will be the constant volume heat, I mean molar specific heat at constant volume। फार्मूला लिखते हैं सीधे, देखो इसका सिंबल क्या होगा, CV। क्या डेफिनेशन बनेगी, हीट रिक्वायर्ड पर यूनिट मोल, मोल का सिंबल N ले रहे हैं हम लोग, एंड पर यूनिट चेंज ऑफ टेम्परेचर। तो यूनिट क्या हो जाएगी, जूल का क्या होगा, हीट का जूल, मोल, N का मोल और इसका केल्विन, ये यूनिट होगी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, गॉट इट। तो हीट पर यूनिट, हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल बाय 1 डिग्री। फार्मूले को एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर somebody ask you the definition, इसी को एक्सप्लेन करना है, चाहे तो लिख दो नीचे, चलो यहाँ पे लिखो, हीट रिक्वायर्ड टू चेंज टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस by 1 Kelvin at constant volume, by 1 Kelvin at constant volume। वॉल्यूम नहीं बढ़ने देना, जैसे प्रेशर कुकर है ना, उसमें वॉल्यूम फिक्स रहता है, व्हेन यू कुक एनीथिंग उसका लिड doesn't go out, है ना, more or less volume remains constant। गैस इन द LPG गैस इन द सिलेंडर, वो भी कांस्टेंट वॉल्यूम रहता है। बट इन केस ऑफ combustion in automobile, when the combustion takes place, piston moves outward, that is not constant volume। ठीक है, समझ में आ गया ये। अच्छा, यहाँ से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें, देखो इसमें अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, हीट डेल्टा क्यू विल बी NCV डेल्टा टी। अगर आपको कोई कांस्टेंट प्रोसेस दिया है, बोला जाए कितनी हीट उसमें जाएगी, तो आप बोलेंगे यू विल आस्क हाउ मेनी मोल्स आर देयर, व्हाट इज द मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये भी दिया होगा आपको, चेंज ऑफ टेम्परेचर भी, तो यू कैन फाइंड आउट टोटल एनर्जी। क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, देखो यहाँ पर कांस्टेंट वॉल्यूम में, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में हीट निकालने के लिए ये फार्मूला। ऐसे ही कांस्टेंट प्रेशर पर क्या होगा, हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मोल 1 मोल by 1 Kelvin at constant pressure। Same gas will remain same, constant pressure कैसा, how the process will be there, suppose you take the cylinder and piston, और यहाँ पर देखो, एक मिनट, आर यू देयर? Yes, sir. Yes, sir. तो देखो इसको हमने ये पिस्टन ले लिया ऐसे यहाँ पर, और ठीक है, नाउ आउटसाइड क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। व्हेन यू गिव द हीट, atmospheric pressure is not going to change, piston will start moving outward, outside it is
मीन्स अंदर भी 1 एटमॉस्फेयर होगा, बाहर भी जैसे ही थोड़ा प्रेशर बढ़ेगा piston will move outward. So it is expanding at the constant pressure of 1 atmosphere when you give the heat. So that is a constant pressure process. So now in constant pressure piston will move outward. थोड़ी देर के बाद यहाँ पे आ जाएगा piston, तो वर्क डन भी होगा और इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगी, है ना. तो Cp will be greater. Cp will be, which one will be greater? देखो फर्स्ट केस में आपको क्या करना है कि आपको केवल दोनों केसेस में टेम्परेचर कितना बढ़ाना है, 1 डिग्री. कितना बढ़ाना है, 1 केल्विन बढ़ाना है. फर्स्ट केस में आपने पिस्टन को लॉक किया, वर्क डन तो हो ही नहीं रहा है ना. फर्स्ट केस में नो वर्क डन बिकॉज वॉल्यूम इज कांस्टेंट. तो जो भी हीट देंगे पूरी उसका टेम्परेचर 1 डिग्री जल्दी से बढ़ जाएगा, 1 केल्विन. इसमें वर्क डन भी हो रहा है प्लस इंटरनल एनर्जी भी, इसका टेम्परेचर भी बढ़ाना है. तो Cp is greater than Cv. इसमें ज्यादा हीट लगेगी सेकंड केस में बिकॉज सम वर्क इज आल्सो बीइंग डन. इन फर्स्ट केस नो वर्क इज डन, तो लेस एनर्जी विल बी नीडेड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 केल्विन. स्पेसिफिक हीट में क्या करते हैं, 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ा के देखते कितनी हीट लग रही. दैट इज व्हाट इज द स्पेसिफिक हीटर फॉर 1 मोल or for 1 kg. In case of the liquid and solids, there we define it for 1 kg. For gases, we define it for 1 mole. So therefore, they are called molar specific heats. Clear? Why Cp is greater? Can you tell me why the Cp is greater? Why the heat will be required more in the second case? Because work will also be done. Are you there? Yes, sir. Okay. So how much more there is the relation between both? Let's see what is that relation. इसकी डेफिनेशन खुद लिख लेंगे आप. जैसे ये लिखा, हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस बाय 1 केल्विन. और अगर हमें क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने यहाँ से, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम, तो NCP डेल्टा T. अगर आपको बोला जाए कांस्टेंट वॉल्यूम में प्रोसेस में टोटल हीट सप्लाइड निकालो, तो यू विल आस्क हाउ मेनी मोल्स आर देयर, व्हाट इज द Cp फॉर दैट प्रोसेस एंड हाउ मच इज द चेंज ऑफ टेम्परेचर. तो कांस्टेंट वैल्यू में यहाँ पे Cp आएगा, सॉरी कांस्टेंट प्रेशर में Cp आएगा, कांस्टेंट वैल्यू में Cv आएगा. तो यू कैन गेट द हीट इजिली. हीट निकालने के बाद आप वर्क डन भी निकाल सकते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, है ना, और यूज करके इंटरनल एनर्जी भी निकाल सकते हैं ना. यूनिट इसका भी सेम रहेगा, है ना. यहाँ से यूनिट आएगा, देखो सेम यूनिट विल बी हियर आल्सो, जूल्स पर मोल पर केल्विन, दोनों का सेम रहेगा. बोथ विल हैव सेम यूनिट. डन. ओके. तो दोनों के बीच में जो रिलेशन है, हाउ मच Cp इज मोर, आई आस्क्ड यू हाउ मच Cp इज मोर. तो जो डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू R. R क्या होता है, we have seen universal gas constant which is nearly 8.3 SI unit. Okay. So can we prove this? Yes, we can get this result even if it may not be taught to you in the class, because यहाँ पे हमें क्या इंटरनल एनर्जी का एक फार्मूला मिलने वाला है, इसीलिए we are doing it. देखो, now this relation prove करने के लिए we are going to use the first law of thermodynamics. Let's see how to do. Consider n mole of the ideal gas. First heat is supplied at constant volume. Constant volume में heat supply करते, change of volume will be 0. Therefore
वर्क डन विल बी 0, है ना। तो यहाँ पर देखो ये वर्क डन यहाँ पर लिख सकते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, हीट सप्लाइड इज इक्वल टू चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। तो वर्क डन तो हो गया 0, तो जो भी आपने हीट सप्लाई वो चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी हो जाती है ना। नाउ we know CV is equal to अभी हमने ये पढ़ा डेल्टा क्यू, या फिर डायरेक्ट लिखते चलो इसको, वी कैन जस्ट रिड्यूस द स्टेप। एट कांस्टेंट वॉल्यूम heat supplied was how much? NCV delta T. But heat supplied is nothing but delta U. Therefore, delta U is equal to NCV delta T. ठीक है कि नहीं? तो आपको इंटरनल एनर्जी का एक ये रिलेशन मिल गया। आपको कभी भी इंटरनल एनर्जी निकालनी, चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी निकालनी है तो नंबर ऑफ मोल्स एंड CV विल बी गिवन एंड डेल्टा T। और अगर आपको केवल इंटरनल एनर्जी निकालनी है तो डेल्टा हटा देंगे दोनों तरफ, NCV इंटू T। आपको टेम्परेचर दिया है, 100 टेम्परेचर पर 100 मोल के लिए कितनी इंटरनल एनर्जी होगी, तो यू विल आस्क CV हाउ मच इज द CV फॉर दैट प्रोसेस, फॉर दैट केस, फॉर दैट गैस, है ना। तो इंटरनल एनर्जी निकालने के लिए व्हाट यू नीड 3 टर्म्स, नंबर ऑफ मोल्स, CV एंड T। और चेंज निकालने के लिए टेम्परेचर चेंज होगा तो इंटरनल एनर्जी भी चेंज होगी, ये फार्मूला आ जाएगा। नाउ एट कांस्टेंट प्रेशर, अभी सेम हीट को कांस्टेंट प्रेशर पे हीट करेंगे तो हीट सप्लाइड विल बी NCP डेल्टा T, तो ये हो जाएगा CP आ जाएगा यहाँ पर। और नाउ यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन PV is equal to nRT। नाउ सिंस प्रेशर इज कांस्टेंट, प्रेशर तो कांस्टेंट है, एनी चेंज इन टेम्परेचर विल प्रोड्यूस चेंज इन वॉल्यूम। अगर टेम्परेचर चेंज करेंगे तो वॉल्यूम चेंज होगा, ये तो कांस्टेंट है, तीनों